I'm Ritika Sharma, teacher of Ambi International School, Nayagaon, Kota. So kids, today we will read chapter 13, Learning to Cook. So kids, let's start the chapter Learning to Cook. This is an extract from The Children of the New Forest by Captain Frederick Marryat. The book is set in the 1640s during the England Civil War between the supporters of King Charles I and the parliamentarians. So this extract is based on some children and ये जो story है 1640s की set की गई है और ये कब की है? The English Civil War between the supporters of King Charles I and the parliamentarians. तो the parliamentarians burned down the mansion of Colonel Beverley, a supporter of King Charles. जो पार्लियामेंट्रियंस थे उन्होंने कॉलोनल बेवरी जो सपोर्टर थे किंग चार्ल्स के, उनका जो मैंशन था उसको बर्न कर दिया था. कॉलोनल बेवरी वॉज अर्लियर किल्ड इन बैटल और कॉलोनल को पहले ही उनके जो बैटल हुआ था उन दोनों के बीच में, पार्लियामेंट्रियंस और जो किंग के बीच में बैटल हुआ था उनके बीच में उनको पहले ही किल कर दिया गया था, मार दिया गया था. हिज 4 चिल्ड्रन आर रेस्क्यूड. नाउ हिज 4 चिल्ड्रन, कॉलोनल के जो 4 चिल्ड्रंस हैं उनको बचा लिया गया बाय जैकब आर्मिटेज ने. जैकब आर्मिटेज ने उनके जो 4 चिल्ड्रंस थे, कॉलोनल बेवरली के जो 4 चिल्ड्रंस थे उनको बचा लिया था. हु वॉज लॉयल टू देयर फादर. जैकब ब्रिंग्स दम अप हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, ब्रिंग दम अप एज ग्रैंड चिल्ड्रन. जैकब ने उनको एज अ ग्रैंड चिल्ड्रन, एज अ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह ब्रिंगअप किया, उनकी परवरिश की थी. सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. जैकब अराइव्ड एट द कॉटेज एंड फाउंड द चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर. वॉचिंग फॉर हिम दे ऑल हैस्टेंड टू हिम एंड द डॉग रश्ड बिफोर देम टू वेलकम हिज मास्टर. सो स्टोरी अराइव्स विथ जैकब कॉटेज में पहुँचता है. जैकब अराइव्ड एट द कॉटेज, जैकब कॉटेज में पहुँचता है एंड फाउंड द चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर एंड चिल्ड्रन वर आउटसाइड ऑन द डोर एंड दे वर वेटिंग फॉर जैकब. जैसे ही उन्होंने देखा दे ऑल मूव क्विकली टुवर्ड्स जैकब and the dog also rushed before them to welcome his master. Down, smoker, good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. So वो बोल रहा था, मतलब वहाँ पे वो बोल रहा था down, smoker, गुड डॉग, वेल बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी आओ, मीन्स उनको एनकरेज कर रहा था. मिस्टर एडवर्ड, आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड. तो वो कहता है कि मिस्टर एडवर्ड मैं उतना ही तेज़ रहा. आई वॉज वेरी फास्ट, जितना कि मैं हो सकता था. आई कुड. हाउ हैव मिस्टर हम्फ्रे एंड योर सिस्टर बिहेव्ड. देन ही आस्क्ड, देन जैकब आस्क्ड कि तुम्हारी जो सिस्टर है एंड मिस्टर हम्फ्रे जो एक उनके वन ऑफ द चिल्ड्रन चाइल्ड, उसका नेम था, कि वो सब कैसे हैं. बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे. एंड ही सेज, जैकब सेज टू एडवर्ड, टू हम्फ्रे एंड सिस्टर्स कि तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आउटसाइड नहीं रहना चाहिए. यू शुड नॉट गो आउटसाइड, यू शुड नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज फॉर द ट्रूपर्स आर स्कोरिंग फॉर द फॉरेस्ट. बिकॉज जो ट्रूपर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जिनकी वजह से ये लोग छुपे हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो उनको इधर उधर देख रहे हैं. एंड मे सी यू, और हो सकता है मे बी if they will see you, they can do whatever they want. Let us come in directly, for it would not that they should come here. Will they burn the cottage down? Then Alice inquired to Jacob कि क्या वो हमारा कॉटेज जला देंगे. As she took Jacob's hand, yes, my dear, I think they would. So Jacob said, yes, maybe he would burn our cottage if they found that you and your brothers were in it. If the troopers found, if the soldiers found that they were in the cottage, they obviously burn the cottage. They all entered the cottage, which consisted of 1 large room in front and 2 back rooms for bedrooms. तो ये कॉटेज का बता रहे थे, कॉटेज का आर्किटेक्चर बता रहे थे कि वहाँ पे 2 bedrooms हैं. There was also a 3rd bedroom which was behind the other 2. वहाँ पे एक 3rd bedroom भी था जो कि बाकी 2 bedrooms के पीछे था. And did not have any furniture in it, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था. Now let's see what we can have for dinner. So now they were thinking that what we would cook for dinner. We can have for dinner, there's venison left
I know, said Jacob. Jacob ने कहा कि today we will cook venison. Venison means meat of a deer. So come, we must all be useful. Who will be cook? Now Jacob asked, who will be cook? So I will be cook, said Alice. Alice ने कहा that I will be cook. मैं खाना बनाऊंगी. If you will show me how, so you shall, my dear, said Jacob. Then Alice said to Jacob that if you teach me how to cook, then I will cook for sure. Then Jacob ने कहा कि हाँ, of course मैं सिखाऊंगा तुमको, and I will show you how. There's some potatoes in the basket in the corner and some onions hanging on the string. We must have some water. Who will fetch it? Then उन्होंने कहा कि कुछ onions रखे हैं, कुछ potatoes रखे हैं, उनको लेकर आओ, उनको fetch करना है. I will, said Edward. Edward ने कहा कि हाँ, ये काम तो मैं करूँगा. Then who took a pail and went out to the spring. The potatoes were peeled and washed by the children. So सबको अपना अपना काम distribute कर दिया गया. Jacob and Edward cut the venison into pieces. Jacob और Edward ने venison को pieces में cut कर दिया. The iron pot was clean and then the meat and the potatoes put in the water into the pot and placed on the fire. Now they all are doing their work. Now I will cut up the onions for they will make your eyes water. I don't care, said Humphrey. So Humphrey से कहा गया कि don't cut the onions because it makes you cry. तुम्हारी आंखों में पानी आ जाएगा. I will cut and cry the same time, and Humphrey took up a knife and cut away most painfully, although he was obliged to wipe his eyes with his sleeve very often. So लेकिन Humphrey को वो काम करना था. Humphrey को onions को chop करना था, तो वो बहुत happy भी था, बहुत obliged था कि हाँ वो ये काम कर रहा है. You are a fine fellow, Humphrey, said Jacob. Jacob ने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो. You are a fine fellow. Now we will put the onions in and let it boil. Let it all boil up together. Now Jacob ordered them. Jacob suggested them that now we will put the onions in the iron pot and now we will boil it. Now you see you have cooked your own dinner, isn't it pleasant? So Jacob ने कहा उन children से, उन बच्चों से कहा that now you see you have cooked your own dinner, isn't it pleasant? Isn't it happy? Isn't it pleasant? Yes, they all cried, and we will eat our own dinner as soon as it is ready. So the children cried. The children was very happy that yes, we have cooked our own dinner, and when the dinner will be prepared, we will eat it as soon as possible. Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer, and Alice, you will find some knives in the drawer. Then again Jacob ordered to them that Humphrey तुम जाओ plates लेकर आओ, और Alice से कहा गया कि तुम drawer में से knives लेकर आ जाओ. And let me see what can little Edith do. और जैकब ने कहा कि let me see कि जो little Edith है वो क्या कर सकता है. Oh, she can go to the cupboard and find the salt shaker. Edward, just look out, and if you see anybody coming or passing, let me know. So Jacob said कि तुम जाओ विंडो पे खड़े हो जाओ, और जो भी कोई आ रहा हो तो हमको इन्फॉर्म कर देना. Let us inform us. So we must put you on guard till the troopers leave the forest. The children set about their task, and Humphrey cried out as he very often did. Now this is jolly. So the food is prepared. Food has been prepared by the children, and the children were very jolly. They were very happy, and while the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. So while the dinner was preparing, so Jacob उनको क्या सिखा रहा था कि चीज़ों को एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में कैसे रखा जाता है. The floor was swept and the fireplace was made tidy. He showed Alice how to wash out a piece of clothes. तो वो धीरे धीरे उनको काम सिखा रहा था, जो घर के जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उनको सिखा रहा था. And Humphrey how to dust the chairs. They all worked merrily, and while little Edith stood and clapped her hands. But just before dinner was ready, Edward came in and said, there are troopers galloping in the forest. So when the food was preparing, Edward came and said कि जो troopers हैं वो
इंस्पेक्ट कर रहे हैं, पूरे फॉरेस्ट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं. जैकब वेंट आउट एंड ऑब्जर्व दैट दे वर कमिंग इन द डायरेक्शन दैट वुड लीड नियर द कॉटेज. जैकब वेंट एंड जैकब सॉ कि वो उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं जहाँ पे हमारा कॉटेज है. He walked in and after a moment's thought he said, "My dear children, those men may come and search the cottage. You must do as I tell you." So उन्होंने कहा चिल्ड्रन से कि हो सकता है वो यहाँ पर तुमको देखने आए, तुमको इंस्पेक्ट करने आए, क्योंकि वो जो कॉटेज की तरफ ही आ रहे हैं. So उन्होंने कहा कि do whatever I tell you, I explain you. So Humphrey, you and your sister must go to bed. Then Jacob ordered to Humphrey and sisters को उसने ऑर्डर दिया कि तुम जाओ बेड पर जाके सो जाओ. And pretended to be very ill, and he suggested to the Edward, Humphrey and his sisters that तुमको ये pretend करना है that you are very ill, you are very sick. Edward, take off your coat and put on this old hunting frock of mine. You must be in the bedroom attending your sick brother and sisters. और तुमको एडवर्ड क्या करना है, वो एडवर्ड को बताते हैं कि तुमको ये करना है, अपने सिस्टर्स के ब्रदर सिस्टर्स के पास बैठे रहना है, ये बताना है कि दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैम. Come, Edith dear, you must pretend to be asleep and have your dinner afterward. एंड वो एडिट से कहते हैं कि तुमको प्रिटेंड करना है दैट यू आर वेरी सिक. जैकब टुक द चिल्ड्रन इनटू द बेडरूम एंड रिमूविंग द अपर ड्रेस विच वुड हैव बेट्रेड दैट दे वर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल, पुट दैम इन बेड एंड कवर्ड दैम अप टू द चिन्स विद द बेड क्लोथ्स. सो जैकब जो है उनको बेडरूम में लेकर गए और उन्होंने उनके जो सारे अपर क्लोथ्स थे वो रिमूव करके उनको वहाँ पे सुला दिया, उनके ऊपर बेड क्लोथ्स लगा दिए, बेडशीट्स वगैरह जो भी है. Edwards had put on the old hunting shirt which came below his knees. Edward ने जो एक old hunting shirt पहन ली, पुरानी सी शर्ट पहन ली, which came below his knees and stood with a mug of water in his hand by the besides of two girls. और वो मग लेकर अपनी सिस्टर्स के पास में खड़ा हो गया. To remove Jacob went to the outer room to remove the platters laid out for dinner. So Jacob बाहर गए, Jacob ने सारा का सारा जो खाना था उनको वहाँ से हटाया, जो प्लेट्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे लगाई थी उनको भी उन्होंने हटा दिया. And he hardly done so when he heard the noise of the troopers and soon afterwards a knock at the cottage door. And उन्होंने इतना जल्दी ये काम किया ताकि पहले से ट्रूपर्स ना आ जाए. And soon afterwards a knock at the cottage door, और वो कॉटेज डोर पे जैसे ही उन्होंने सारा अपना जो जितना भी जो काम था, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सब कंप्लीट कर लिया, उनको बच्चों को सुला दिया और अपना जो प्लेटर्स वगैरह थे उन सबको क्लीन कर दिया, और सडनली नॉक होता है डोर पे. वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे? वाई दे आर प्रिटेंडिंग लाइक दे आर सो पुअर, so that they cannot, the troopers cannot understand that they are their children. Come in, said Jacob. Who are you, my friend? So Jacob said कि Jacob asked, who are you? Said the leader of the troop entering the door. One of the troop asked that who are you, my friend? So a poor forester, sir. तो replied Jacob ने reply किया that I am a poor forester. Under great trouble. I am in very trouble. I am very trouble, bother. What trouble, my man? Then troop asked कि what trouble, कैसी परेशानी है तुमको? I have the children all in bed with the smallpox. So he said that I have 4 children and I have the children all in bed. They all are ill with the smallpox. Nevertheless, we must search your cottage. तो वो कहते हैं कि खैर छोड़ो हमको, we must search your cottage. We will have to find your cottage. We will have to search your cottage. Then you are welcome, replied Jacob. Jacob replied, you are welcome. Yes, of course you can search. Only don't frighten the children if you can help it. So he said to troop ki if you don't help them, if you cannot help them, if you could not help them, then you don't need to frighten them. You don't need to afraid them.
The man who was now joined by others began the search. So they all were searching the cottage. Jacob opened all the doors of the rooms and they passed it through. Little Edith shrieked when she saw them. जो little Edith था वो बहुत ज़्यादा shriek हो गया, बहुत ज़्यादा shiver करने लग गया. But Edward patted her, लेकिन जो Edward था उसने उसको थोड़ा सा sympathy दिया. And he patted his head and told her not to be frightened, and he told her that not to be frightened, not to be afraid. The troopers, however, took no notice of the children. They searched thoroughly and then came back to the front room. It's no use remaining here, said one of the troopers. Then trooper said that there is no one who we are searching for. ठीक है? So this was the story. Hope you understood it. Thank you.